morning, students. So we start with our third lecture in isomerism. And what we did last lecture was I was doing tautomerism with you. Tautomerism में mainly हमने keto-enol tautomerism किया, and we understood कि usually keto form is more stable. जो keto form होता है वो ज़्यादा stable होता है. But कुछ exceptional cases में it's the enol that will become more stable. तो keto-enol में enol form कभी ज़्यादा stable होता है. ये पूरा discussion मैंने आपके साथ किया. ठीक है? So this is where we were, right? Now what next? I also give different kinds of tautomerism with other functional groups. So it's not that only keto and enol will undergo tautomerism, but there are different functional groups which can also get involved in tautomerism. यहाँ तक मैंने आपको समझाया. आज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर tautomerism के लिए keto enol की बात करते हैं, tautomerism के लिए okay, you are having a ketone and you are adding acid or a base in acidic medium or a basic. How the tautomerism is enhanced. तो अभी हम tautomerism की mechanism देखते हैं, which can happen base catalyze also, which can happen acid catalyze also. So what I am discussing is mechanism of tautomerism. और इसमें मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ आपको बेस कैटलाइज tautomerism. What if in the medium we take this? Then how this tautomerism process is going to get initiated? And obviously keto-enol. So हम base catalyze keto-enol in the conversion. So I will start with the keto form, and we already know what is the key thing. We need a acidic H. We need a alpha hydrogen. Okay, that is the one is finite, right? So I'm starting with a ketone, and this is the alpha H. Okay, that I have marked. Now, what will happen when the medium is basic? When the medium is basic, this H is acidic. Okay, this H is acidic, and base, okay, is going to take away this H. And the electrons of this bond will be utilized to form, okay, a double bond here. And then the minute a double bond is formed, this will get converted into a enolate ion. First step is water is gone, remove water in presence of base, and what we get is RCH double bond, and this O is minus. And ये जो ion बना है, इसको कहते हैं enolate ion. We get the formation of enolate ion. And then obviously enolate ion again can take a proton from the medium and can form enol. तो enolate ion to enol कैसे दिखाएंगे? अभी medium में proton है. This enolate ion can extract the proton from the medium and will become enol, and the medium is once again basic. So this is how in presence of base, okay, we can promote the keto to enol conversion. Same can be happening in presence of acid. So I'll show you acid catalyzed keto enol interconversion.
एसिड कैटालाइज कीटोन इंटरकन्वर्जन में क्या होगा? Now the ketone is in presence of acid. The medium is acidic. What is going to happen is protonation of this ketonic oxygen in presence of acidic medium. Acidic medium will favor protonation of oxygen. So the oxygen will get protonated to this and then medium will extract H plus. अभी medium H plus को acidic H plus को निकालेगा and we will get the enol formation. So I'll show you from the medium. Keep this H and we get the enol formation. So both the mediums, acid as well as base, the tautomerism is favored. So tautomerism में mainly क्या हो रहा है? What does these two mechanisms are telling us? कि it is obtained by transfer of acidic hydrogen. दोनों cases में basically एक acidic है एक जो ये है. So what is happening in tautomerism? There is the transfer of acidic hydrogen within a molecule to a basic center. इस molecule के अंदर एक acidic hydrogen भी है और एक basic center भी है. और tautomerism में there is a transfer of acidic hydrogen within a molecule to a basic center, and it is an intramolecular. I can call it as intramolecular acid-base migration, and that's the reason it can be catalyzed by acid also, and it can be catalyzed by base. So दोनों के presence में ये possible. So is the mechanism clear to everybody? So you please write this. So I just need to explain you one last concept in tautomerism, and then we can go ahead. Make you solve some questions on tautomerism, and then I'll start with stereoisomerism today. So we're explaining what is deuteration, and we can see some problems based on deuteration. So deuteration में क्या होता है? Compound which are exhibiting tautomerism, if you place it in boiling water,
हेवी वाटर में प्लेस करने के बाद क्या होगा, जो एसिडिक एच है जो माइग्रेट करता है, जो एक्सचेंज होता है, that H is going to get substituted, that H is going to get replaced by deuterium. The hydrogen atoms which can participate in tautomerism will be replaced by deuterium. Okay, this is what is your ketoenol tautomerism. ठीक है, अभी इसमें ड्यूटेरेशन हम समझ गए, तो इसका मतलब, अगर एग्जाम्पल दे, अगर आई एम हैविंग एसीटोन, तो एसीटोन में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन tautomerism? ऑल अल्फा एच, राइट, सारे अल्फा एच जो है they can get involved in tautomerism, right? And eventually what will happen? Eventually all these hydrogens, now this can happen in presence of acid, this can happen in presence of base, but eventually by placing it in heavy water, all the hydrogens that can participate in tautomerism will get replaced by deuterium. And this is what is deuteration. This process is called deuteration. So I can explain you this, how exactly this is happening. ये कैसे होता है? How do we get the exchange of deuterium? I start, इसकी mechanism बता, I start with this one, right? There is a keto group and there is a alpha H. Now what happens is that alpha H goes ultimately acid ho ya base ho. What we get is elimination of this alpha H and a double bond coming here between the two carbons, right? And that alpha H will ultimately go on carbonyl oxygen. यही होता है वो आपका deuteration. तो अभी इसमें देखो, when this process is happening, you will get this, right? And so this is your enol. I've shown you the enol. अभी आगे क्या हो सकता है? This H is mobile, right? This H is mobile. So this H can move. And there is a negative charge. And there is a double bond coming here. And this carbon can become more negative. So what will be the next step now? I'm writing this carbon with a negative charge and a double bond over here. Now this is in contact with D2O. So this will get substituted by deuterium. And like this, gradually all the hydrogens which can get involved in tautomerism can get substituted by deuterium. This is what is deuteration. So any question on deuteration will come. We have to substitute all possible hydrogens which can take part in tautomerism by deuterium. All possible hydrogens which can take part in tautomerism can get substituted by deuterium.
So if I'm giving you this compound, try writing what we get after deuteration. Or I'm starting with this compound. Try writing what we get after deuteration. This is what is deuteration that I'm discussing. ये करो फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ and we start with stereoisomerism. After this, we will start with stereoisomerism. We'll be doing this as next question. I'm putting some compounds here, and you just tell me which compounds, okay, will exhibit automerism. Structural isomerism में सबसे important isomerism automerism है. More questions in competitive exam, important competitive exam are asked on automerism. Discussing some questions here. Putting some compounds. क्या करना है? हमको सिर्फ ये बताना है इसमें से कौन सा will exhibit automerism.
Start clearing other side of the board. Continuation of the same question. I'm putting one more question. Can you show automatism on questions? Very compound is plural. तो ये डिक्लेरेशन तो हो गया होगा. What is the answer here? C, here on this alpha H gets substituted by deuterium. This is what will happen. अब इसको स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं. तो कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? So what are the basic things that we need? A withdrawing group and alpha carbon. There has to be an acidic base. So there is a withdrawing group, but there is no acidic base. So this is not going to show you protomerism. Here also, okay, there is no withdrawing group, so no protomerism. यहाँ पे नाइट्रो withdrawing group है, but ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है. So this is not going to exhibit automerism, but this will. Right, because there is a withdrawing group nitro and on alpha carbon there is a acidic hydrogen. यहाँ पे क्या होगा? ये केस में क्या होगा? ये केस में जो टॉटोमेरिज्म होने वाला है ना, वो टॉटोमेरिज्म का स्पेशल केस that I discussed with
that is what is happening a para-tautomerism. This H is going to migrate to this one. As from the ring, alpha H cannot migrate. यहाँ पे we will get tautomerism. Here there is no para H. Here there is no withdrawing group. Here there is withdrawing group but no H. So these three won't give us tautomerism. To solve the third one, I'm putting one more example in the sequence, a different example in the sequence. Then the next question that I'm giving you now is I will write the two tautomers and we have to understand in the following pairs which is more stable. ये tautomeric pair जो है इसमें more stable pair कौन सा है और जो more stable pair होगा उसका ही concentration क्या होगा ज्यादा. So that's the next question. I'm writing this side.
right? So I've given you few compounds and we have to discuss which out of the following pair is more stable. Let us finish the right hand side of the board जो already मैंने दिया है. So which of the following can exhibit isomerism? Tautomerism चल रहा था ना, तो tautomerism कहाँ पे exhibit होगा? Will I get it here? Answer is क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पे? क्योंकि कोई अल्फा H नहीं. I will get it in B because there is alpha H. Again in C there is no alpha H. Again in D there is no alpha H. So third case में only B is the case where I can get the alpha H and tautomerism. Next example जो है which of the following okay can show you tautomerism. So can I get a tautomerism here? अभी यहाँ पे क्या समझना है? There are two alpha H here and they can very much bind. Which hydrogen cannot be involved in tautomerism is this? ये जो ब्रिजहेड वाला हाइड्रोजन है ये tautomerism में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. But फिर भी there are alternate hydrogen available and this compound can be involved in tautomerism. But you look at this here, those H are replaced by methyl. There is an alpha H here, but this cannot get involved in tautomerism as at bridgehead position. What is not possible? sp2 hybridization is not possible at bridgehead position. And that's the reason this cannot get involved in tautomerism. Can I get a tautomerism here? Yes, I mean there are acetic available and pure. Okay, so these are the three cases in this where I can get tautomerism. But वो bridgehead वाला जो केस था, bridgehead hydrogen just cannot get involved in tautomerism. That was the key point that you have to understand in that example. अब ये next case करते हैं. हमको क्या समझना है? ये जो तीन पेयर मैंने बोर्ड पे दिए हैं आपको, इसमें से what is more stable? हमको more stable वाली पेयर समझनी है. I'm putting the next question there. पेयर दे रही हूँ और हमको लिखना है कि पेयर में where will be higher enol content. इनोल में कहाँ पे higher enol content हमको मिलेगा?
Let us solve this also. So इसमें what will be having higher enol content? Okay, it says higher, which is more stable. So this will be more stable here. Aromatic. यहाँ पे this will be more stable. And here there is no more special case. So C double bond O is going to be more stronger than C double bond. तो वाला form, amide वाला form will be more. जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके लिए मैंने आपको डिस्कस करते वक्त एक रेडीमेड लिस्ट ही दे दी थी. इफ यू रिमेम्बर दैट फॉर परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट. तो हो गया सॉल्व. लेट अस डिस्कस ये परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट में. तो पहला एग्जांपल आपको मैंने दिया है. यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन है. तो सिंपल जब भी हमारे अल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं तो जो मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज बाय कार्बोनिल डबल बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबलाइज होता है देन इनॉलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. And hence enol content of acetaldehyde will be more than enol content of acetone. यहाँ पे acetaldehyde का enol content ज्यादा होगा acetone से. Ketone और diester में what will have more enol content? It's diester. Diester and beta ketone में it will be beta. And a beta ketone and a extended conjugated stabilization with phenyl ring. This will be having more enol content. So I think इसका एक list मैंने already दिया था. So nothing much remains to discuss in this, right? So that finishes, I can say, tautomerism, and I'm starting with stereoisomerism. And in stereoisomerism specifically, हम जो part आज start कर रहे हैं वो है geometrical isomerism. Let us understand the basic things about geometrical isomerism. Let's start with stereoisomerism.
And in stereoisomerism, so what are stereoisomers? The compound will have same molecular formula and it will have same sequence of covalently bonded atoms. But there is a different spatial orientation of those atoms in three-dimensional space. And this is what is known as stereoisomers, and the phenomena exhibited by them is called as stereoisomerism. इसको दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स. There are two types: configurational and conformation. So let us understand what is configurational isomers. So आपके जो configurational isomers होते हैं, okay, they cannot be converted into one another just by rotation around carbon-carbon bond. या आप हम ऐसे कह सकते हैं कि they cannot be converted into one another without breaking or forming other bonds. इनको कहते हैं configurational isomers. तो इनका interconversion possible नहीं है. Or we can also say uh, without breaking or forming other bonds. So basically, they can't get interconverted. और जो conformational stereoisomers होते हैं, okay, जो conformational होते हैं, they can be interconverted into each other by rotating around carbon-carbon bond. तो ये दो टाइप हो गए. अभी conformational is one kind of stereoisomerism that we will see, but configurational के दो टाइप है. Configurational में हमको geometrical isomerism भी पढ़नी है और optical isomerism.
तो अभी स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम 3 आइसोमेरिज्म सीखेंगे. It will be geometrical, then optical, and then I will teach you conformational stereoisomerism. So 3 isomerisms we are going to see in stereo. उसमें से 2 आपके कॉन्फ़िगरेशनल है और एक आपका conformational. So let us start ahead now, and I start teaching you geometrical isomerisms. What are geometrical isomers? This is due to restriction in rotation, either across carbon-carbon double bond or in a cyclic compound. So सिर्फ carbon-carbon नहीं, any double bond basically. So this isomerism arises due to restricted bond rotation around a double bond or a cyclic bond. So alkenes, cycloalkanes, C double bond N double bond N are the compounds that show geometrical isomerism. So इसका main reason होता है restriction in rotation. You get this isomerism in alkenes, cycloalkanes, compounds with C double bond N, compounds with N double bond N. These are the main classes under which we are going to see and understand geometrical isomerism. तो मैं restriction in rotation across double bond आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि why there is restriction in rotation across double bond. By taking a sp2 hybrid carbon, I have one So I'm just looking out for one more sp2 hybrid carbon. Yeah, this is the one. I'm showing you some models so that you can understand what I'm talking about. Okay, so see, I'm showing you a sp2 hybridized carbon now. ध्यान दो. So this carbon that I'm holding is sp2 hybridized. You can see these 3 orbitals. Can you see 1, 2, and 3? These are the 3 sp2 hybrid orbitals. And what is these 2 that I'm holding? They are unhybridized p. तो अभी अल्कीन है, एक अल्कीन ले लेती हूँ और इसको समझा. तो अल्कीन में बेसिकली क्या होता है? A carbon is sp2 hybridized like this, a trigonal planar geometry.
राइट। ये इतने सिग्मा बॉन्ड्स है और इनका जो पाई क्लाउड है वो लैटरली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना, right? This is what is your alkane. This geometry I'm trying to show you with the model to make you understand restriction in rotation. ये restriction in rotation का concept मैं आपको समझा रही हूँ. तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन को मैंने दूसरे sp2 हाइब्रिड कार्बन से ज्वाइन कर लिया. You can check. Okay, this is one carbon, this is another. Okay, these are the two more hybrid orbitals, and this is unhybridized P. ये unhybridized P है. Can everybody see this with the clarity? Now, I am attaching some groups here. एक कंपाउंड बना लेते हैं. ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है ना? So this is a particular alkene. Say I'm having H here, H here, CH3 here, and CH3. So I've attached those groups here. You can see. And now what I do, I show you that pi bond formation, where there is lateral overlap between the two p orbitals. Okay, so this is actually what is alkene. Now let us understand what is restriction in rotation and what is geometrical isomerism in this. तो ये डबल बॉन्ड है और किसी पर्टिकुलर मेथड से ये अल्कीन ऐसे बन गया जिसमें अगर ये मैं मिथाइल ग्रुप कहूँ ऑरेंज वाला और ये मैं हाइड्रोजन कहूँ, तो इफ आई एम शोइंग यू लाइक दिस इज योर डबल बॉन्ड पोजीशन. Both the hydrogens are on one side, both the methyl groups are on one side. Now, can they get interconverted? Can I put methyl up and hydrogen down simply by rotation around carbon-carbon bond? See what I try to do and what will happen. Now, when I try to rotate, this double bond is going to break if I'm going to rotate and make it like this. That is, when there is a double bond, understand that there is a restriction in rotation. When there is a double bond, there is a restriction in rotation. Okay, a molecule cannot rotate freely across carbon-carbon double bond. What is the reason? जो आपका सिग्मा पाई क्लाउड, सिग्मा का क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके exactly parallel pi cloud होता है. The pi cloud is exactly parallel to sigma cloud. So if you try to rotate across sigma bond, the pi bond is going to break. So there is a restriction in rotation, and this is the reason, okay, for geometrical isomerism. ये जो reason हमने डबल बॉन्ड में देखा, यही हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड्स में. This is what happens in cyclic compounds. Cyclic compounds may be due to the ring. The carbon-carbon bond is not free to rotate. तो ये मैंने आपको restriction in double bond बता दिया. अभी condition for geometrical isomerism बताती हूँ. When I will get geometrical isomerism, ये सारी जो ग्रुप्स है वो एक होती है, सब H होता, तो क्या मुझे geometrical isomerism मिलती across double bond? Answer is no. So let us understand condition for geometrical isomerism. जो each doubly bonded carbon होता है must be connected to different groups. ये basic है. तो each doubly connected double bond जिससे connect होता है, that carbon must be connected to different groups. So I'm discussing condition for geometrical isomerism. I'll keep calling it as GI.
us understand some examples and understand where GI is possible, where GI is not possible. So if I'm having a carbon-carbon double bond and on this carbon, I'm having two different groups. And on this carbon also, I'm having two different. Will I get a geometrical isomerism? Yes. In this case, I will get a geometrical isomerism. What is the geometrical isomer of this? Keep the position of group same on one carbon atom and exchange the position of groups on another carbon atom. ये जो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है. If I'm having this kind of a compound, यहाँ पे x है और z है और यहाँ पे x है और y है. Then they show geometrical isomerism. Yes, you just have to see a particular carbon, okay, and a particular carbon forming a double bond on each of them if the groups are different. अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तभी geometrical isomerism नहीं बनी. ओके, यहाँ पे x है, x के साथ कोई भी दूसरा ग्रुप अगर है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी अगर दोनों कार्बन पे जो दो ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट. एंड हाउ टू राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? जस्ट कीप द ओरिएंटेशन सेम on one carbon and exchange the orientation of groups on another carbon. So these two that I have written on the board are geometrical isomers of each other. We can have four different groups also. Okay, तो ये पहले दो केसेस में GI मिलेगा. मैंने आइसोमर्स का स्ट्रक्चर भी लिखा है वहां. If I'm having all groups different. So I'm having X, I'm having Z, I'm having Y, I'm having W. Then they show geometrical isomerism. Yes, both the carbons which are forming carbon-carbon double bond, they are having different groups. How to write the isomer? Keep the orientation fixed on one carbon and rotate it on another carbon. These two compounds on the board are geometrical isomers of each other. Which case I won't get when I won't get when say one has two states. तो यहाँ पे no GI possible. बाकी सारे केसेस जो मैंने लिखे बोर्ड पे, यहाँ पे GI पॉसिबल, यहाँ पे GI पॉसिबल, यहाँ पे GI पॉसिबल, बट यहाँ पे नो GI पॉसिबल. तो कंडीशन समझ में आया? डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन समझ रहे हैं हम. अभी इसमें एक नॉमेनक्लेचर यूज होता है, नेमिंग सिस्टम है ये आइसोमर्स का. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी आई टेक अ बेसिक एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू व्हाई वी नीड अ नेमिंग सिस्टम. इफ आई एम टेकिंग दिस alkene, then how to write its GI? I keep the position fixed on one carbon and I rotate the position of groups on another carbon. These two compounds here are geometrical isomers of each other. ये दो compound एक दूसरे की geometrical isomers. इनका जो RUPAC नेम है, as covalently bonded atom का जो कनेक्शन है वो सेम है. CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी CH3CH डबल बॉन्ड CH3 है. ओके, तो स्टीरियो आइसोमर्स में जो कोवैलेंट बॉन्ड का कनेक्शन होता है वो तो सेम होता है. फर्क किसमें होता है? ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ कार्बन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें फर्क होता है.
That is what is different. So, what is the IUPAC name of this compound? IUPAC name of this compound is butene, and IUPAC name of this compound is butene. But they two are not the same compound. ये जो ओरिएंटेशन में थोड़ा सा फर्क आता है, इससे ये दो अलग कंपाउंड्स है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स और इनके केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है, बट दे डेफिनेटली डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी. हम क्यों इनको सेम कंपाउंड नहीं कहते? क्योंकि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में difference है. In spite of having same molecular formula, same structure, same IUPAC name, they are having difference in their physical properties. They will differ in their melting point, they differ in their boiling point, they can differ in their solubility, and because they are differing in their physical properties, we have to accept that they are not same. We have to say that they are not same and they are different. अगर ये अलग कंपाउंड है तो दोनों को सेम नेमिंग नहीं चलेगी. We cannot give same name to both of them. So we need a nomenclature. There are a couple of nomenclatures available to name a geometrical isomer. I am discussing with them. The most common is cis and trans. तो सिस एंड ट्रांस में क्या जरूरी होता है? जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप होना जरूरी होता है. और अगर दोनों कार्बन पे एक ग्रुप तो आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है, एटलीस्ट एक ग्रुप तो दोनों कार्बन पे आइडेंटिकल होना चाहिए. और अगर ये आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है तो हम इसको सिस आइसोमर कहते हैं. So if the identical group is on the same side of carbon-carbon double bond, then it is called as cis isomer. And opposite side of the double bond, then it is called as trans isomer. So I explained you why we need a nomenclature, and I'm discussing with you cis trans nomenclature. So we can give a heading here: cis trans nomenclature. इसके लिए दो सेम ग्रुप होना जरूरी होता है. ये जो आइसोमर है इसको IUPAC में प्रीफिक्स आ जाएगा. ये हो जाएगा cis butene and this will become trans butene, and these two are geometrical isomers of each other. One is cis, another is trans. So I'm giving you some more examples of cis and trans. Try naming them. आप इनको सिस और ट्रांस नेम भी दे दो और इनके आइसोमर्स भी ड्रॉ करो.
यहाँ पे ऑब्वियसली जो आइसोमर होगा वो so I can use cis trans here. This isomer is trans, has two same groups, methyl groups are on opposite side. This isomer is cis. नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्यूसी में भी डिस्कस किया था, एक है मालिक एसिड और दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड। मालिक एंड फ्यूमेरिक है, जिसमें जो सिस आइसोमर है वो मालिक है और जो ट्रांस आइसोमर है वो फ्यूमेरिक। अभी नेक्स्ट केस देखना, नेक्स्ट केस में क्या है, between the two doubly bonded carbon there is no group common, and then in this case okay the दो structure जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं are they geometrical isomers of each other? Answer is yes, these two are undoubtedly geometrical isomers of each other, but we cannot define them, we cannot name them by using cis trans nomenclature. Okay, so they are geometrical isomers but cannot be defined with cis and trans. तो ऐसे टाइप के लिए फिर अलग सिस्टम में आपको समझाती हूँ, cannot be defined with cis and trans. But definitely they are geometrical isomers. इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जिनमें हम सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म या सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए और एक नॉमेनक्लेचर है, वो Z&E सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो आई टीच यू सम Z&E सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बिफोर दैट मैंने डबल बॉन्ड के अराउंड बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, अभी साइक्लिक के भी शेयर करती हूँ। साइक्लिक में क्या जरूरी है, आई नीड एट लीस्ट टू कार्बन्स हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। साइक्लिक में जो कार्बन होते हैं उनमें दो अलग ग्रुप होना जरूरी है। Have that, then that the bound can show here. So this is a trans isomer and this is a cis isomer. Is that clear? ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। अभी we will learn the next system of nomenclature, जहाँ पे हम cis and trans नहीं कर सकते, वहाँ पे हम जो दूसरी सिस्टम Z&E सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज करने वाले हैं। Start explaining it. Can you copy this? Clearly decide.
So start understanding Z and E system of nomenclature. Z and E short form से these come from German words. Z is Zusammen and means same side. And E stands for antigen, and antigen means opposite side. So what are they talking about? Same side and opposite side. I'll try to explain. So basically, this nomenclature we are going to use, okay, where I'm having 4 different groups attached to doubly bonded carbon. These kind of systems where cis and trans is failing, okay, we can use E and Z system of nomenclature. तो अभी इसमें करना क्या है? इसमें जो ग्रुप्स अरेंज है, ग्रुप्स अटैच है, उनके लिए अभी मैं आपको प्रायोरिटी रूल्स बताऊंगी. So we need to learn some rules which are called as priority. इसमें मुझे आपको डिस्कस करना है अभी प्रायोरिटी के रूल्स. ये प्रायोरिटी रूल्स को 3 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, कॉर्न, इंगोल्ड एंड प्रेलॉग. और named after them, they are also known as CIP. तो ये रूल्स मैं सिखा दूंगी, बट ये रूल्स सिखाने के बाद करना क्या है? करना ये है कि जो कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 ग्रुप हमको दिखते हैं, प्रायोरिटी रूल यूज करके इन दोनों में डिसाइड करना है कौन सा हाई प्रायोरिटी है, कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2. तो सपोज उसके बाद X is high priority and Y is low priority. And the same thing I have to do on another carbon. Now there is Z and W. I will be using the priority rule, and on the basis of priority rule, I will compare Z and W. And between Z and W, I have to understand which has high priority, which has low priority. Suppose Z gets a high priority and W gets a low priority. So this is what is, okay, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के अंडरस्टैंडिंग से दिस इज व्हाट. अभी ये सेम अपोजिट क्या है? अगर दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन वी विल कॉल दिस एज जेड आइसोमर. ये सेम साइड हमको हाई प्रायोरिटी ग्रुप को देता है. या अगर हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे है तो लो प्रायोरिटी ऑब्वियसली सेम साइड पे ही हो जाएगी. तो पहले प्रायोरिटी लगानी है. प्रायोरिटी कैसे लगानी है रूल्स में समझा. So there will be rules coming which will help us understand कि एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, कौन सा हाई प्रायोरिटी, कौन सा लो प्रायोरिटी. एक मिथाइल है, दूसरा क्लोरीन है, कौन सा हाई प्रायोरिटी, कौन सा लो प्रायोरिटी is. I am going to teach you with a set of rules. But once you understand that, ultimately जो ग्रुप्स है उसमें से एक हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, दूसरा लो प्रायोरिटी हो जाएगा. और अगर दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, देन दिस इज व्हाट इज जेड आइसोमर. और इसका जो आइसोमर होगा उसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे X है और यहाँ पे Z है. So they will go opposite to each other, and that will also make a low priority group go opposite to each other. तो ये हाई प्रायोरिटी अपोजिट हो गया और ये लो प्रायोरिटी अपोजिट हो गया. तो अपोजिट साइड is antigen, and this is what is basically
our Z and E nomenclature. तो Z and E nomenclature हम उसको भी यूज कर सकते हैं जिसको हम सिस ट्रांस से नेमिंग करते हैं, बट उसको यूज कर सकते हैं जिसको हम सिस ट्रांस से नेमिंग नहीं भी कर सकते. तो जो सिस है, कैन आई नेम इट बाय Z and E? Yes. But which cannot be defined by cis and trans, all those compounds also can be defined by what? Z and E system of nomenclature. तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देखनी है और प्रायोरिटी के हिसाब से हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड is Z and high priority on opposite side is going to be. So to solve and understand this nomenclature, ये understand करने को, ये nomenclature understand करने को हमको सबसे पहले अभी क्या समझना पड़ेगा? Priority rule. What I have to understand now are priority rule. So let us start understanding this priority. तो इसमें सबसे पहला रूल है कि हमको atomic number of the first connecting atom to be considered होता है. Higher is the atomic number, more is the priority. So I'm giving you homework. Atomic number of first connecting atom to be considered. Higher is the atomic number, more is the priority. So I'll give you an example to make you understand this point. See the example. So I'm taking a molecule, alkene, which is, and I write the isomer of this. So this definitely shows GI. Let us write the isomer of this, and then let us understand the priority and name them in Z and E system of nomenclature. तो अभी क्या करना है मुझे इस कार्बन पे फोकस करना है and look at the two atoms. One is iodine, another is chlorine. किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का. So iodine will get a higher priority, chlorine will get a lower priority. On next carbon, I'm having fluorine and bromine. So bromine will get a higher priority, chlorine will get a lower priority. So I've arranged the four groups in order of priority on individual carbon. Now what I see is both the high priority groups here are on opposite side, and then this is a E isomer, and here obviously both the high priority or low priority will come on same side. तो ये बन जाएगा Z isomer. So is the first rule clear? We just see the atomic number of the first connecting atom. हम फर्स्ट कनेक्टिंग एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं. अब इसके वेरिएशंस में समझाती हूँ आपको आगे चल के.
See the next example and the next rule then. So I've taken this alkene here. अभी इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट कनेक्टिंग एटम सेम है ना। जो फर्स्ट कनेक्टिंग एटम है वो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे तो चलो डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम कर देंगे। आई एम टेकिंग हियर C2H5. So everywhere you will see the first connecting atom is same. So how do I use the atomic number rule? So if the first connecting atom is same, then go through the next connecting atom and so on until you get a difference in atomic number. तो अगर पहला कनेक्टिंग एटम सेम है तो हमको उसके आगे का एटम देखना है, हमको उसके भी आगे का एटम देखना है। ओके, तो वी हैव टू गो थ्रू नेक्स्ट कनेक्टिंग एटम। फिर there is a difference in atomic number. तो कैसे करना है मैं समझाती हूँ। देखो हम ये दोनों की बात करते हैं, CH3, okay, so there is a carbon attached to CH3, right? ये डबल बॉन्ड कार्बन है which is attached to CH, and C2H5 में it is attached to CH2 and CH. तो ये दोनों को हम कंपेयर कैसे करते हैं? हाउ डू वी कंपेयर दिस? So to double bond carbon, first carbon atom attaches same. I cannot differentiate looking at first carbon atom attack. But to this carbon, there are 1, 2, and 3s attached, and to this carbon, there are 2 hydrogen, and third one is carbon attached. So there is a point of difference here. What is higher? This. So this will get a higher priority. This will get a lower priority. And same here. पहला atom same है. Okay. उसके बाद में on this there are 2H and 1O. On this there are 2H and 1Cl. So this will get a higher priority and this will get a lower priority. And this will be same sign, a Z isomer. और इसका जो आइसोमर होगा दूसरा वो हो जाएगा E isomer. So is it clear? The second rule, if we see all atoms same, तो फिर आपको आगे देखते जाना है till we see a point of difference.
अभी थर्ड रूल जो मैं बता रही हूँ, व्हाट इफ द ग्रुप अटैच हैज अ मल्टीपल बॉन्ड। जो ग्रुप अटैच है उसको मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी रूल में कंसीडर करते हैं एज ए द एटम्स आर अटैच। डबल बॉन्ड होगा तो एटम इज अटैच ट्वाइस और एटम इज अटैच थ्राइस अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है। So when multiple bond is present, both the atoms attached to the double bond or triple bond are considered to be duplicated or triplicated. Will explain you the meaning of this. See, suppose I am having a group attached, which is C double bond C. Okay, ये group attached है, okay? और यहाँ पे suppose H है, तो इसको मुझे क्या कंसीडर करना है? I need to consider the C double bond C as attached 2 times. मतलब ये कार्बन को, meaning of this is if this carbon is attached to this carbon with a double bond, I have to consider it like this. दोनों एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट में 2 बार अटैच है, हमको ऐसे कंसीडर करना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो these two are attached with each other in simple words. आप डबल बॉन्ड को 2 बार सिंगल बॉन्ड से अटैच समझो, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार सिंगल बॉन्ड से अटैच समझो। तो ये जो सी एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इसको प्रायोरिटी में मुझे समझना है कि कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है और नाइट्रोजन 3 बार कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच। Okay, this is what it is to be considered. तो हमको प्रायोरिटी की वक्त ये डुप्लीकेटेड या डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर को कंसीडर करके प्रायोरिटी समझनी है। So we'll give you an example to make you understand this double bond, triple bond wala story. So now see this. And this we are talking double bond, triple bond in a group. So I'm attaching a CHO. There is a double bond between this carbon and oxygen. So I have to consider that this carbon is attached to oxygen twice with 2 single bonds. And this oxygen is attached to this carbon twice with 2 single bonds. ये होता है duplicated और triplicated. I am taking another group here, CH2OH. And so how do I have to consider this case? जैसे देखो
ये जो कार्बन ये एक ऑक्सीजन से ऑलरेडी अटैच है ना, और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ऐसे हमको समझना। दिस इज व्हाट इज डबल बॉन्ड, and I'm comparing this carbon now with this group. So this is now aldehyde group मैंने represent किया. अब ये CH2OH वाला group है. CH2OH वाले group में the carbon is attached to 2H and 1O and H. तो अब इन दोनों में प्रायोरिटी लेते वक्त यहाँ पे दोनों का ये H तो कॉमन है, but here there are 2O and here there is 1O. So what gets a higher priority where there are two? So double bond to be considered as 2 times single bond, triple bond to be considered as 3 times single bond. ये होता है duplicated और duplicate. तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? This one will get a more priority and this one will get a low priority. Is this clear to you? Next case में बेंजीन है, तो बेंजीन में यहाँ पे क्या है? सी दिस कार्बन, यहाँ का जो ये कार्बन है, इट इज अटैच टू अ कार्बन विद अ डबल बॉन्ड एंड अनदर कार्बन हियर. तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड मतलब दो कार्बन से सिंगली बॉन्डेड यहाँ पे अटैच, एंड देयर इज अ थर्ड कार्बन. So if I am comparing a benzene carbon, benzene का कार्बन देखो, ये वाला कार्बन रेड मार्क किया हुआ कार्बन, ये रेड मार्क किया हुआ कार्बन, तो ये एक कार्बन से, ये वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, दिस वन, and this carbon it is attached with the double bond. So double bond I have to consider it as if it is attached twice with single. तो ये बेंजीन का कार्बन अल्टीमेटली 3 कार्बन से अटैच है, जिसको हमको इससे कंपेयर करना है. ये 2 कार्बन से अटैच है बट एक H से अटैच है. So what will get a higher priority? This will get a higher priority and this will get a low priority. And this isomer that I have drawn on the board is there. तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट डिफिकल्ट नहीं है. तो ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड का रूल नंबर 3. अभी रूल नंबर 4 ये है कि जो दो ग्रुप्स है अगर उन दोनों के एटॉमिक नंबर प्रिसाइजली सेम है तो फिर हमको क्या करना है? ऐसे कभी होगा सीधा एग्जाम. If atomic numbers are same, then we have to go for atomic masses. So I'll give the example for rule number 4, then I'll give you rule number 4. So if there is a carbon-carbon double bond, here there is CH3 and there is CH3, and here there is CH2OH and there is CD2OH. तो अभी यहाँ पे ये कार्बन है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम हाइड्रोजन सी है, सबके एटॉमिक नंबर प्रिसाइजली सेम है. सो this is the case where the two groups have same atomic number. Then what is to be done? If two groups have same atomic number, then their atomic masses will get a priority. ये कभी करेंगे जब भी एटॉमिक नंबर सेम. If two groups have same atomic number, then atomic mass gets a priority. This is rule number 2. जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा. So this will be 1, this will be 2, this will be 1, this will be 2, and again this is the Z isomer. This is clear. और लास्ट रूल E and Z में
is compound के लिए. There is a lone pair. It is C double bond and will show geometrical isomerism. So how do I give priority? If there is a lone pair and a bond pair, what gets the priority? Bond pair gets the priority over a lone pair. So if there is a lone pair and a bond pair gets the higher priority over a lone pair. It's number 5. तो यहाँ पे CH3 C2H5 में प्रायोरिटी ज्यादा C2H5 का होगा, यहाँ पे CH3 का होगा, यहाँ पे CH3 का होगा और लोन पेयर भी गेट अ लोअर प्रायोरिटी. So again this is a Z isomer only. ये फिर से Z isomer है. So I taught you Z and E nomenclature. What next? I am giving you some simple problems to solve on Z and E, and that's it in today's lecture. Then we will continue with more problems in the next lecture. GI continues. GI has just begun. I just show you the geometrical isomerism, double bond के restriction से कैसे होता है. कुछ C double bond C के एग्जाम्पल देखे और बस नॉमेनक्लेचर सिखाया. अभी और कुछ भी हमने GI में नहीं किया. So lot more to go ahead in GI. बहुत कुछ GI में हमको करना है. So I'm just giving you some alkenes to be named in Z and E. तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो दोनों के अराउंड हमको फाइंड आउट करना है Z कॉन्फ़िगरेशन है या E कॉन्फ़िगरेशन है अक्रॉस बोथ द डबल बॉन्ड्स. ये कंपाउंड अगर आप देखोगे तो ये 3 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइन है. सब में वही है. So name of this alkene, all four are same. All four are geometrical isomers of each other. So they all are 3 methyl hexa 2,4 diene.
and let us understand Z and E here. तो जो पहला केस है, the double bond at position 2. How are the groups attached here? यहाँ पे कैसे groups है? What group I'm having here? Obviously here there is H and here, okay, ये जो double bond है, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, एक H है. So high priority किसको जाएगा? मिथाइल को जाएगा, है ना? और यहाँ पे मिथाइल है और ये बड़ा सा ग्रुप है, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा? बड़े से ग्रुप को जाएगा. एंड बोथ द हाई प्रायोरिटीज आर ऑन अपोजिट साइड. सो ऑन सेकंड कार्बन इट्स E, सो वी राइट 2E. और फोर्थ कार्बन पे क्या होगा? फोर्थ कार्बन पे भी आप देख लो, फोर्थ कार्बन पे देयर इज अ H हियर. यहाँ पे एक H है एंड दिस बिग ग्रुप. दिस विल गेट अ हाई प्रायोरिटी. देयर इज अ H हियर एंड दिस ग्रुप. So here also the high priority groups are on opposite sides. So this is 2E4E. 2E4E will be a prefix added before this, and that will be the actual IUPAC name of this alkene. तो इस alkene का actual IUPAC name होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 2E, 4E -3 methyl -hexa 2,4 diene. This will be the actual IUPAC name of this alkene. और ये हो जाएगा 2Z. सेकेंड पे दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे है, बट 4. एंड द स्टिल नेक्स्ट विल बी, बोलो फटाफट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. द सेकेंड इज E, but the 4 is Z. And the fourth case is both Z. To check on the board, I have written 4 GI, 4 geometrical isomers of the same alkene, and we have named them by using Z and E nomenclature. हमने इनको Z and E nomenclature से नेम भी किया है. So any doubt here? Anyone who cannot understand anything till here? We just begin geometrical isomerism today, and I think that's it in today's lecture. I am stopping here. More classification, more types of GI, geometrical isomerism in different types of functional group. All this is going to be the discussion in my next lecture. ये सब हम अगले lecture discuss करेंगे. So that's it, everybody. See you next time. Bye.